And in this class, we will try to solve question number 3 and question number 4. So the basic concept has already been taught to you in the class. Now you try to solve question number 3, part A. Where you have to determine the value of output voltage V naught, and you have to draw the waveform of V naught. So you are given input voltage, a sinusoidal voltage with maximum peak voltage as 8 volt, a resistance of 2.2 kilo ohm, one silicon diode, and one external DC power supply, 4 volt. So you have to calculate the V naught and draw its waveform. So first draw the input waveform with peak amplitude 8 volt and corresponding to different points, different regions, forward region, reverse region. You have to draw the waveform for output V naught. Now I'm giving you 4 to 5 minutes to look at the diagram and try to solve it. After that, if you have any doubt, then I will tell you how to solve it.
So in first part output voltage is 15 milliampere. Yes, you have to calculate the value of V naught, not the current. Basically, it is asking you the maximum voltage that you will get here. So you would draw the waveform V naught and you will get all the answers of this part. Excuse me, sir. Yes. So actually, I missed some part of this topic due to some network issues. So could you discuss one part of this question number three? Yeah, I will discuss just 2 to 3 minutes. Please wait more. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. No.
Okay, let's try to solve this. This is our input waveform Vi in red color, and the maximum amplitude of the waveform is 8 volts. So this is lying from -8 to 8 volts. Now, the very first step that you have to go for is try to find out the reason in which your diode is forward biased. And for that, what you have to do is take 2 points across the diode, that is point A and point B. Now this is positive P side, this is N side, and this is a silicon diode. So you know that in forward bias, the knee voltage of the silicon diode is 0.7 volts. So this diode will be forward biased if the potential difference between its P junction and N junction is greater than or equal to 0.7 volts. So what you do for that, you write a simple equation, that is the diode will be forward biased if VA minus VB is greater than or equal to 0.7 volts. This is the first condition which will make the silicon diode forward bias. If the potential drop difference across its two terminals is greater than 0.7 volts with this polarity, P side and N side taking, then your diode will be forward bias. Now what you have to do, you have to solve this equation now. How? You have to know what is the potential or voltage at point A and point B. So point A is your directly connected to the power supply. Okay, so what in VA will be equal to VI, and VB is connected to this DC power supply equal to 4 volts and positive terminal of the 4 volts. So that means VB is your 4 volts. Okay, so VA, I will write VI minus VB is plus 4 volts. So 4 is greater than equal to 0.7 volts. Okay, now simply solve this, that Vi should be greater than equal to 0.7 plus 4, or Vi should be greater than equal to 4.7 volts. Now, this is our condition for the diode to be forward biased. Diode will be forward biased if these conditions are satisfied. Okay, now that you have find out the transition line, that is the deciding factor which will make your diode forward or reverse bias, which is your Vi should be greater than equal to 4.7 volts. Now what you do, you draw a line in the graph equal to 4.7 volts. Let's say draw with this. This is 4 and this will be around 4.7 volts. So this is your 4.7 volt line. Now, if your input voltage is greater than 4.7 volt, then your diode is forward bias. इस step तक आने के बाद now you will try to find out the output voltage when your diode is forward biased. उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए you have to draw the equivalent circuit. Now I am erasing these things, and now I will replace the silicon diode with its equivalent circuit.
for the forward bias. So in forward bias, the equivalent circuit is a battery connected like this. This will be as it is. Okay, and the potential of across this this DC power supply, that will be your 0.7 volt. So this is the equivalent circuit of the forward bias diode. अगर आपका फॉरवर्ड बायस नहीं है तो हम कुछ और करते हैं, लेकिन इस टाइम पे फॉरवर्ड बायस है तो हम इसी को कंसीडर करेंगे. ठीक है, नाउ यू remove these two elements from the circuit and draw this circuit as your equivalent circuit. Now you tell me what is the output voltage V naught for this circuit. 4.7 volt. 4.7 वोल्ट. क्योंकि सिंपली आपके माइनस प्लस सीरीज में दो बैटरीज लगी हुई हैं. ठीक है, उसकी पोलैरिटी भी इस तरीके से है कि आपकी रिजल्टेंट 4.7 वोल्ट आएगी. So your output voltage will be 4.7 volt in the region in which your diode is forward biased, and your diode is forward biased in this region. ठीक है, तो जहां पर भी इनपुट सिग्नल लाई कर रहा है with value greater than this line, your diode is forward biased, and you simply draw the waveform equal to 4.7 volt. ठीक है, so I am just drawing that. So this will be my output voltage for forward bias diode for this particular region. इस पूरे ग्राफ में nowhere the input voltage is greater than 4.7 volt. So your diode will be forward biased only in this particular region and nowhere else. So this will be your output V naught for this particular region. Now in rest of the region, your diode is reverse biased. So if your diode is reverse biased, now you have to draw the equivalent circuit for the reverse bias. I am removing this, and now I will replace this with the equivalent circuit of the diode in case of reverse bias. So in case of reverse bias, your circuit will look like something like this. I have simply open circuited the diode. Okay, now you have to know, you have to remember that this is the equivalent circuit for silicon diode in reverse bias. Reverse bias वो कब होगा, that will be decided with the help of this equation. Okay, दोनों में कंफ्यूज मत करना कि दोनों एक ही चीजें एक ही साथ कंसीडर कर रहे हो. First derive this equation. Now you know that your diode is reverse biased in this particular region. This region. So for this particular region, consider this circuit as equivalent circuit. Now try to find out the value of V naught. तो बताइए अभी क्या है वैल्यू, क्या आना चाहिए आंसर? Initial. Yes, whatever input voltage you are having, that will be come out at the output circuit. ठीक है, so simply draw the input waveform as it is. ठीक है, मैंने आपको एक ही उसमें प्लॉट में बनाया है. यू कैन ऑल्सो ड्रॉ इट टू डिफरेंट प्लॉट. आपको ये लाइनें जो है वो ध्यान में रखनी है. ये these levels you should remember. So for green color we are having output voltage V. अब आप इसमें दो चीजें मेंशन बता सकते हो कि the maximum value of the output voltage is 4.7 volt and minimum voltage is -8 volt. ठीक है, आपके आंसर से आप मैच भी कर सकते हो 4.7 and -8 volt. So this is how you solve this kind of numerical. The very first thing is derive this equation. उसके लिए आपको पोलैरिटी ध्यान से रखनी पड़ेगी. डायोड सिलिकॉन है कि जर्मेनियम है. जर्मेनियम होता
In that case, we would have written here 0.3 volt. यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इन दैट मेंशन भी नहीं किया हुआ है कि आइडियल डायोड है कि नहीं है, तो आप आइडियल भी ले सकते हो, अपनी मर्जी से सिलिकॉन भी मेंशन किया है तो आप उसको ध्यान रखना है कि क्या मेंशन किया गया है. नॉर्मल डायोड आइडियल डायोड होता तो हम यहाँ पे सिंपली 0 वोल्ट लिखते. The very first thing is to derive this transition equation, transition conditions. Draw a line equivalent to this. Make marks that this is for forward bias, this is for reverse bias. Once you have done this, now forget about any external DC power supply, whatever input you voltage, that forget about that. Now simply draw the equivalent circuit for forward bias, and now you look see what are you getting. Then draw the equivalent circuit for reverse bias. Now see what are you getting. ठीक है, so for forward bias simply draw this line, जो भी आपके आउटपुट है in this region में आपकी जो भी कंडीशन से बनती है वो आप ड्रॉ. Excuse me, sir. यस सर अगर किसी केस में भी आउटपुट है जो वो 0 आ जाए रिवर्स बायस में, तो उसको कैसे ड्रा करेंगे? जीरो एक्सिस के साथ पैरेलल. अगर आपकी आउटपुट 0 आती है तो इसी लाइन को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता, या फिर रिवर्स बायस में होता तो उसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता. सर 4.7 पर कैसे जाएंगे? 4.7 पे कैसे जाएंगे? यस नहीं, वो तो आपको डिपेंड करेगा ना. अब जैसे एकदम से 4.7 पे नहीं जाएगा वो, यस या तो आपकी कुछ ऐसी कंडीशन बन रही है कि इससे ठीक ऊपर जाते ही 4.7 है और इससे ठीक नीचे आते ही 0 है, तो उस ट्रांजिशन को भी आप ऐसे ही दिखाओगे कि जैसे हमारे स्टेप सिग्नल्स होते हैं लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक 0, फिर इंस्टेंटेनियस एट दिस पॉइंट 4.7, फिर 0 और फिर लगातार 0 रहा. इस तरीके से ऐसा केस बनेगा नहीं डायोड के केस में कि आपके एकदम से ट्रांजिशन दिखाई दे, या तो वो इनपुट को फॉलो करेगा. हाँ, एक केस में कर सकता है जब आपकी इनपुट वोल्टेज भी साइनोसॉइडल की जगह स्क्वायर वेव हो, उस केस में ऐसा होगा. ठीक है. नाउ ट्राई टू सोल्व दिस सेकंड क्वेश्चन in which we have simply replaced the battery with -4 volt and we have also changed its position where we have connected in the network. अब ये क्वेश्चन आपने खुद करना है. ओके, आपके पास 3 से 4 मिनट है ये सोचने के लिए कि यू कैन डू दिस और नॉट. आपको कोई डाउट लगता है तो आप पूछिए, अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यू विल सोल्व दिस ऑन योर ओन. Sir, we have to calculate V output in which branch? Yes. In third question. Third question में output V naught means maximum value of V naught and minimum value of V naught. And when you have to draw the waveform, then you have to draw corresponding to the change in the input voltage. So the only thing that you have to do is basically just draw the complete waveform out of V naught, and from that you can simply look and find out the minimum and maximum voltage.
Excuse me, sir. Yes. Sir, in the third ka B part, वहाँ पे when we take the 2 points A and B, so उस time for A it will be 4 volt because it's connected to that, right? ए पॉइंट आपने किस पे लिया है, पी साइड पे कि एन साइड पे? सर P side पे. पी साइड पे लिया है, तो उस पी साइड पे देखो एक बैटरी भी लगी है और उस बैटरी के साथ में आपकी इनपुट वोल्टेज भी लगी है। राइट, तो वो सिंस वो सीरीज में है तो फिर वो उनका जो कुछ भी टोटल आएगा तो वो बनेगा. वो यस, ओके, एंड सर वो उसका तो वो अर्थिंग से कनेक्टेड है, तो सर बी पॉइंट का हम. बी का सिंपली जीरो हो जाएगा, वो ग्राउंड से कनेक्टेड है। ओके सर, तो सर फिर उसके बाद फिर वो वी आई एंड जो हमारा 4 वोल्ट बनता है उसका वॉट एवर एडिशन वी गेट माइनस 0 शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0.7. यस, ओके सर, ओके, थैंक यू. ओके। Sir, यस, so in fourth part, first diode will be forward bias when input is 6 volt, and other will be in forward bias in minus 8 volt. या समथिंग लाइक दैट। हम देखते हैं अभी, मेरे ख्याल से ठीक है, ऐसे ही ऐसा ही होगा। Okay, now let's see this question where we have two diodes and two external DC power supplies, one triangular input waveform, and we have to draw the output waveform. So same thing, first you draw two conditions that will decide the biasing region for both of the diodes. So let's consider this as our diode 1. This is diode 1. This diode we will consider. So for that same thing, I am taking this as point A and this as point B. This is point A and this is point B. Okay, so simply write that diode 1 will be forward bias, diode D1 will be forward bias, if VA minus VB is greater than equal to 0.7 volt. Now VA is simply connected to the input terminal, so that will become VI, and VB is connected to 5.3 volt, and where 5.3 volt positive polarity is connected to B, so minus 5.3 volt is equal it should be greater than equal to 0.7. That means VI should be greater than or equal to 6 volt. So this is first condition for diode D1. So I simply draw a line at 6 volt. This is 10 volt, so 6 volt will be around here, and this will make diode D1 forward bias. Okay, now we will consider diode D2. So same thing for D2 also. I am taking this as point A and this as point B.
So diode D2 will be forward biased if VA minus, इनफैक्ट इसमें उल्टा लिखना पड़ेगा हमको, if VB minus VA is greater than equal to 0.7 volt. Now VB, on point VB we have connected 7.3 volt, but it is negative terminal is connected to point B. So we will write minus 7.3 volt minus VA. VA is simply connected to the input voltage. So VI, that should be greater than equal to 0.7 volt. So from there we can get the condition as minus of VI should be greater than or equal to 8 volt, or VI should be less than minus 8 volt. Okay, any problem in driving this equation? Okay, so your diode D1 will be forward biased if VI is greater than equal to 6 volt, and D2 will be forward biased if VI is less than minus 8 volt. Now you remember the inequality signs, that if it is greater than equal to and you are changing it, then we will not consider the equal to sign, then it will be less than minus 8 volt. Okay, so draw the equivalent of minus 8 volt in this circuit. This is equal to 8 and this is equal to 6. Maximum voltage is, and here also it is minus 10. Okay, now this is for reverse biasing of diode D2. Sorry, forward biasing of diode D2. Now in between these, both the diode are reverse biased. In this region and in this region, both the diodes are reverse biased. ठीक है, तो रिवर्स बायस है तो पहले हम रिवर्स बायस की कंडीशन ही निकाल लेते हैं. दैट विल बी इजी व्हेन यू आर गिवन टू डायोड्स. ठीक है, तो रिवर्स बायस में हम क्या कर सकते हैं, वी विल सिंपली replace these two diodes with their equivalent circuits, and their equivalent circuits in reverse bias are open circuits. So if you will take the open circuit, in that case you will simply remove these branches. No effect of these voltages on the output voltage. It will be open circuited and your input voltage will appear as it is at the output terminal. तो उसको अगर हम ड्रॉ करेंगे अब, तो वो हमारा इस तरीके से बन जाएगा. सिंपली ड्रॉ अ लाइन. जो हमारी इनपुट की लाइन है उसके ऊपर ही आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए. This is output in case of when both the diodes are forward biased. Now consider the second case, which is any one diode in forward bias. So let's say this one diode D1 is forward bias and this is reverse bias. So if this is reverse bias, then remove this. If this is forward bias, then simply replace it with its equivalent circuit, which is a battery of 0.7 volt.
Now you tell me what should be the output V naught. -7.3 plus -7.3 minus 0.7. हाँ जी, -7.3 minus Salt. 0.7. नहीं, इस केस में आप क्या कर सकते हो, जो वोल्टेज इस ब्रांच में है वही तो यहाँ पे मिलेगी। 6 volt. 5.3 प्लस 0.7 माइनस प्लस माइनस प्लस, तो आपका 6 वोल्ट आ जाएगा। तो 6 वोल्ट आ जाएगा, तो उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ 6 वोल्ट। सेम केस में आपका यहाँ से होगा, जब ये वाला डायोड आपका फॉरवर्ड बायस होगा, ये रिवर्स होगा, तो ये चीज हट जाएगी। दिस डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस इन दिस रीजन and this will be forward bias. So replace it with an equivalent circuit, which is a battery of 0.7 volt connected like this. Now in this case, the output voltage will be whatever voltage you have in this branch. That is minus 7.3, and then this is minus 0.7. That is minus 8 volt. So now your graph is complete. You have sketched the output waveform and input waveform. So you can write that minimum voltage will be minus 8 volt and maximum voltage will be 6 volt. If you have derived these two equations, then your most of the question is complete. उसके बाद आपको simply ये दो lines draw करनी है. After that, look for the reverse bias region of both the diodes, जो कि common बीच का area होता है हमारा generally. ठीक है, so simply consider that case, because in that case both the branches will be open circuited and you will get the input signal. And then consider one diode for forward case, and then consider the second diode. Okay, now simply by looking at the output waveform and input circuit and without calculation, if you want to what we say recheck that whether you have done correct or not, तो उसका हमारा एक शॉर्टकट मेथड क्या है कि this is a simple diode, so this particular diode will clip a particular portion of the input waveform. अब ये कौन सा क्लिप करेगा वो इससे डिसाइड करेगा जाएगा। ये P ऊपर है, N नीचे है, so that means positive part of the waveform will be clipped, और इसकी वजह से negative portion of the part of the waveform will be clipped. So this is a combination of positive clipper and negative clipper first of all. Now we are not considering the ideal diode, we are considering a silicon diode. So there will be a factor of 0.7 volt. We are also having biasing of the diode. So this is a biased clipper circuit. Okay, we have connected the diodes in the parallel branches and we are taking output across the diode branches. So this is a parallel configuration type clipper. पॉजिटिव क्लिपर भी होगा, नेगेटिव क्लिपर भी होगा, तो दैट मींस बीच का कुछ पोर्शन जो है वो आपका इनपुट वेवफॉर्म को एज इट इज रहेगा। कितना क्लिप होगा, नाउ यू डिसाइड विद द हेल्प ऑफ दिस बैटरी। अगर यहाँ पे 5.3 है, आप दिमाग में सोच के देखिए, मैं यहाँ पे बैटरी लगाऊंगा तो 0.7 वोल्ट की पोलैरिटी इस तरीके से होगी, तो वो दोनों सीरीज में डायरेक्टली ऐड हो जाएंगी, तो 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट के ऊपर के क्लिप हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे किसका इक्विवेलेंट बैटरी लगाई 0.7 वोल्ट, इनकी पोलैरिटी आई -8 वोल्ट, तो -8 वोल्ट से नीचे का पोर्शन क्लिप हो जाएगा। तो जब दो डायोड आपके दिए जाए तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आपकी वेवफॉर्म जो वो इस तरीके से दिखाई देगी। 2 क्लिपर्स होंगे उसके अंदर, पॉजिटिव क्लिपर होगा, नेगेटिव क्लिपर। ठीक है, करना कैसे है दैट आई हैव शोन यू स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू इक्वेशन। ठीक है, इट इज आल्सो आस्किंग द करंट इन द रजिस्टर IR। हमारे वोल्टेज तो यहाँ पे देखिए ठीक आ गई हैं, 6 वोल्ट एंड -8 वोल्ट, तो आपको करंट भी निकालने हैं फिर कि मैं करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, करंट की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो वो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, जब रिवर्स बायस होगा उस केस के अंदर हमारा करंट जो है वो इनपुट वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा, या फिर आप सिंपली ऐसे भी निकाल सकते हो कि 6 वोल्ट मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज है, तो यहाँ पे अगर 6 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम कितना है 10, नहीं चलो ऐसे तो नहीं, आप वैसे ही करो सर्किट से सॉल्व करके।
दोनों को ओपन सर्किट करो, इसको ड्राइव करो, वहां से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट निकाल लीजिए। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप करंट की वेवफॉर्म भी इसके नीचे ही बना लो। ठीक है, इसी के अंदर हम बनाने की कोशिश कर सकते हैं करंट की वेवफॉर्म भी। स्टार्टिंग में करंट हमारा जब इनपुट वोल्टेज 0 है तो कितना करंट फ्लो करेगा, और इनपुट वोल्टेज जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे करंट की वेवफॉर्म भी बना सकते हो आप लोग। ठीक है, तो जब तक आपके डायोड फॉरवर्ड बायस नहीं है तब तक करंट तो फ्लो करेगा ही नहीं, सिर्फ आउटपुट वोल्टेज ये पेयर होगी। जब और कोई भी एक डायोड आपका फॉरवर्ड बायस होगा उस टाइम पे आपका करंट फ्लो करेगा। तो जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो इस लूप में आप देख लीजिए कितना करंट है, जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो इस लूप में देख लीजिए कितना करंट है। आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगी, मैक्सिमम वैल्यूज। ठीक है, एनी डाउट? तो थर्ड का जो बी पार्ट है इसमें जब रिवर्स बायस होगा, थर्ड का बी पार्ट, हाँ उसमें जब रिवर्स बायस होगा तब -4 आएगा तो कैसे? देखो, जब जब आपने इनिशियल बोल दिया 0 होगा कि रिवर्स बायस, वी जब आपने आउटपुट बोला कि रिवर्स बायस है तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसको हटा दो एक बार। रिवर्स बायस में यहाँ पे क्या आएगा, सिंपली 1.7 वोल्ट की बैटरी तो आएगी। इनफैक्ट रिवर्स बायस में तो कुछ भी नहीं आएगा, ओपन सर्किट आएगा। ओपन ओपन सर्किट आएगा तो आपकी आउटपुट वोल्टेज तो आएगी 0। अब आपको ये निकालना है कि रिवर्स बायस होगा कब, इनपुट वोल्टेज कितनी होगी तब वो रिवर्स बायस होगी। अब आप वो चेक कर लीजिए और उस टाइम पे आपकी आउटपुट वोल्टेज 0 आनी चाहिए। 0 आएगी ना? हाँ सॉरी, आउटपुट वोल्टेज नो नो नहीं नहीं, 0 कैसे आएगा रिवर्स बायस में? फॉरवर्ड बायस में 0 आएगा। वही सर मैं कह रहा हूँ हाँ इनफैक्ट फॉरवर्ड बायस में सर, भी जो 0.7 बैटरी आएगा। लगी है 4 वोल्ट की, हाँ तो इसमें आपका इनपुट आउटपुट वोल्टेज आएगा V इन प्लस 4 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे सॉरी -4 वोल्ट, यहाँ पे आपका माइनस प्लस है ना, इस तरीके से आप लिख बना सकते हो, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। तो आउटपुट वोल्टेज आपको क्या मिलेगा, V इनपुट -4 वोल्ट। तो whenever in which reason your diode is forward bias, सॉरी रिवर्स बायस, तो उस केस में आपकी आउटपुट होगी V इन -4 वोल्ट। अब वो V इन में से 4 वोल्ट घटा के आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। सर जब रिवर्स वाइज में तो इनपुट 0 होगी, रिवर्स बायस में तो आप ये रिवर्स बायस का ही बता रहा हूँ मैं। ये सर तो 8 वोल्ट माइनस में होगा ना? हाँ 8 वोल्ट तो इधर है ना, लेकिन ये साइनसॉइडल वेव फॉर्म है, ये तो इस तरीके से है, और आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा वो इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट होके मिलेगा। तो सर वो 0 से नहीं माइनस इस सर वो माइनस और माइनस ऐड हो जाएंगे ना, दोनों 8 वोल्ट माइनस माइनस ऐड हो जाएगा ना, 12 हो जाएगा। नहीं माइनस प्लस प्लस माइनस है, आप ये देखिए। सर रिवर्स बायस ले रहे हैं आप? अच्छा हाँ रिवर्स बायस ले रहे हैं तो उस केस में फिर आपका वो एडिशन हो जाएगा। ठीक 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 है, हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा था कि रिवर्स बायस में आउटपुट लेनी कैसे है। अब वो किस रीजन में रिवर्स बायस हो रही है वो तो आप VA माइनस VB से निकाल के ही करोगे। तो वो आपका जब ये आई थिंक 4.7 वोल्ट से ज्यादा होता है तब शायद आ रहा होगा आपके आउटपुट। रिवर्स बायस की कंडीशन क्या आ रही है? सब उससे जब कम होगा तो हाँ हाँ हाँ, यस सर, तो वो मतलब 4.7 से कम होने हैं। आप वो देख लेना कि कंडीशन क्या है, आउटपुट आपको इसी तरीके से लेनी है। तो इस ग्राफ में बस यही फर्क पड़ेगा ना कि जो हम 4 माइनस करके निकालेंगे जब रिवर्स बायस हाँ होगा। हाँ हाँ सर अगर क्वेश्चन में ग्राफ ना दिया हो तो फिर ग्राफ का शेप हम कैसे डिसाइड करते हैं कि साइनसॉइडल होगा, स्क्वायर वाला होगा या फिर नहीं वो ट्रायंगुलर आपको होगा? दिया जाएगा,
आपको दिया जाएगा। इस तरीके का साइन है अब तो जैसे कैसी सिग्नल है। अगर क्वेश्चन अगर नंबर 3 सिंपली में ऐसे हमें दे लिखा नहीं हो, रखा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जैसे ग्राफ नहीं हाँ दे रखा उसके साथ, हमें खुद प्लॉट ग्राफ नहीं करना दिया है। हो तो इस वेवफॉर्म से पता चलेगा आपको। हाँ 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 ठीक है, आई गॉट दैट। ओके ओके, नाउ आई एम एंडिंग दिस मीटिंग एंड प्लीज सबमिट योर ट्यूटोरियल्स। इन केस आपको कोई और डाउट लगता है तो आप मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते एक्सक्यूज मी सर। हैं। यस सर एक वो सर रिकॉर्डेड लेक्चर के लिंक्स प्रोवाइड कर दो। सिर्फ एक ही लिंक मिला है अभी तक, वो क्लिपर वाला बस। ठीक है, मैं आज भेज देता हूँ। हरियश को भेज देना सर, वो एक सर ग्रुप एडमिन वो है रिप्रेजेंटेटिव। आई थिंक मैंने उस चैनल पे डाल दिए हैं अभी। अब आप मैंने वो पब्लिक कर दिया, आप देख सकते हो वहाँ पे। ओके, सर पहले तो आज वहाँ पे नो शाम वीडियो शो को कर रहा था ना एक्चुअली। हाँ अभी मैंने उसको पब्लिक कर दिया है वीडियो। आप सर एक बार फिर भी पर्सनल लिंक भेज देना हरियश को, वो ठीक फॉरवर्ड कर देगा। एक्सक्यूज मी सर। सर यस, इस ट्यूट की सबमिशन अब कब तक है? जैसे आज 2 क्वेश्चन हुए। आज नेक्स्ट ट्यूट से पहले कर देना। ओके हाँ तो इसमें मतलब ये ट्यूट 2 की एक ही फाइल आनी चाहिए, वो कंप्लीट। पहले कर दिया आपने पहले 2 क्वेश्चन अपलोड? नहीं सर, उसका लिंक ही नहीं है। हमने अभी पिछले बार फर्स्ट अरे किया था उसी ट्यूट उसी 1। लिंक पे उसी लिंक पे करना है आपको। और जब भी सबमिट करो ध्यान रखना ट्यूटोरियल 2 कोई भी ट्यूटोरियल हो उसकी कंप्लीट एक ही फाइल होनी चाहिए। तो 2 आपने बेसिक पिछली बार कर लिए, कंप्लीट आज हुआ है तो नेक्स्ट वीक से पहले आप अपलोड कर देना। ओके ओके।